Good morning, students of class 10th. Today we are taking your chapter, How do organisms reproduce? First of all, we are going to start with reproduction. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने ही जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म रेडी करना, है ना? मीन्स अपने ही जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाना. Reproduction is of two types. One is asexual reproduction and another is sexual reproduction. In asexual reproduction, there is no need of gametes, and in sexual reproduction, gametes takes place. Important true. So let's start reproduction. In this chapter, we are going to study about the reproduction, importance of reproduction, types of reproduction, asexual reproduction, types of asexual reproduction, sexual reproduction in plants and animals both. Reproduction. Reproduction is an integral feature of all living beings. The process by which a living being produces its own like is called reproduction. रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें अपने ही जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करती है. ठीक है, जैसे हॉर्स के बेबी हॉर्स होते हैं, काऊ के बेबीज काऊ जैसे होते हैं, ह्यूमन बींग्स के बेबीज ह्यूमन बींग्स जैसे ही होते हैं. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? इफ रिप्रोडक्शन is not going on, then what will happen? The continuity of life will stop. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? जो हमारी लाइफ है, जो हमारी जनरेशन है, उसकी कॉन्टिन्यूटी स्टॉप हो जाएगी और वहीं पर स्पीशीज़ क्या हो जाएगी? डिमिनिश्ड हो जाएगी. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. Reproduction is important for each species because this is the only way for a living being to continue its lineage. Apart from being important for a particular individual, reproduction is also important for the whole ecosystem. Reproduction helps in maintaining a proper balance among various biotic constituents of the ecosystem. Moreover, reproduction also facilitates evolution because variations comes through reproduction over several generations. So, reproduction is essential in variations also. By reproduction, we can see variations in many species. Even we can say that the evolutionary trends, ठीक है, जो हम evolutionary trends देखते हैं, this is only happens due to the reproduction. If any species stops reproduction, then what will happen? It imbalance the ecosystem. Because what is ecosystem? It is the interaction between biotic and abiotic factors. If any species of biotic factor will not continue itself, then automatically it will create imbalance in nature. Like if we are talking about the food chain सबको पता है. Grass eaten by grasshopper, grasshopper eaten by frog, frog eaten by snake. If a snake stops reproduction, then what will happen? The number of frog will increases. If frogs stop reproduction, then what will happen? Number of grasshopper increases. So it will create imbalance in our ecosystem and in our nature. Reproduction is of two types. One is sexual reproduction and another is asexual reproduction. As I said to you earlier that what is sexual reproduction? In sexual reproduction, the involvement of gametes takes place. Involvement of gametes means male gametes or female gametes takes place, and in asexual reproduction, there is no need of gamete to produce their young ones. Now, types of reproduction. There are two types of asexual and sexual. Come to the definition. Asexual reproduction: when a single parent is involved and no gamete formation takes place. The method is called asexual reproduction. No meiosis happens during asexual reproduction. Okay, so cell division. In 9th class we have studied about the cell division. Cell division kind of mitosis and meiosis.
Mitosis cell division helps in increasing the number of cells, and meiosis divisions takes place in the germinal cells only. Okay, so in asexual reproduction there is no meiosis. मियोसिस नहीं होता, मियोसिस डिवीजन देखने को नहीं मिलती, ओनली माइटोसिस मिलती है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें जो स्पीशीज बनती हैं, इसमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, दे आर एग्जैक्टली सेम फोटोकॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल फोटोकॉपी होते हैं. इफ जैसे अगर हम बात करते हैं फंजाइज की, हैं, हम सब ने फंजाइज देखे हैं, हमने ब्रेड मोल्ड्स देखे हैं. ब्रेड मोल्ड के ऊपर क्या होते हैं, फंजाइज होते हैं ना. तो हमने सबने देखा है, फंजाइज देखा है, हमने एल्गीज देखे हैं जिसे हम काई कहते हैं. तो दे आर क्या है ये, एल्गीज बिलोंग्स फ्रॉम द प्लांट किंगडम एंड द फंजाइज बिलोंग्स फ्रॉम द फंजाइट सेल्फ किंगडम. तो जो एल्गी होते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड फंजाइज शो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. So students, they shows asexual reproduction. Sexual reproduction, when two parents are involved in gametes formation takes place, the method is called asexual reproduction. Meiosis happens during gametes formation, which is an important step of sexual reproduction. Now you can see here meiosis. Meiosis is a cell division which is found in the germinal cell that responsible for the formation of gametes. Oogenesis and spermatogenesis. Oogenesis, the formation of ovum, and spermatogenesis is the formation of sperm. So in germinal cells meiosis division takes place, which helps in the formation of gametes. Now we are taking first of all asexual reproduction. Now we are talking about the types of asexual reproduction like fission, binary fission and multiple fission. Binary fission and multiple fission are the types of fission. एक फिजन एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है. ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है. इफ न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली 2 halves then it is binary fission. If nucleus divided by the more than 2 halves then it is called multiple fission, right? Vegetative propagation क्या होता है कि this occurs in the plant's body mainly, कि plant के किसी भी पार्ट से like stem, root, leaves, इनमें से किसी भी पार्ट से जब क्या होता है एक न्यू offspring रेडी हो जाता है, that is called vegetative propagation. And budding is what? The formation of bud takes place. इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक आउटग्रोथ बनती है, आउटग्रोथ को हम बड कहते हैं. और ये बड क्या होती है, जब मैच्योर हो जाती है तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है. रीजनरेट होना, न्यू सेल्स का बनना. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लिजार्ड की जब टेल होती है वो शेड ऑफ हो जाती है तो फिर से एक नई टेल बन जाती है. दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन. फ्रैगमेंटेशन मीन्स स्प्लिट अप होना, टूटना. कि स्प्लिट अप होने से जब एक ऑर्गेनिज्म जब 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाता है तो दोनों नए ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगते हैं. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे कि नाम बता रहा है ना, इट्स नेम सेज दैट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, और वी कैन से दैट स्पोरुलेशन. हम इसको स्पोरुलेशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. सो लेट्स स्टार्ट asexual reproduction. First of all we are taking fission. Fission is a kind of asexual reproduction. In binary fission, most of the unicellular animals prefer this method for reproduction. These organisms reproduce by binary fission, especially when conditions are favorable. Favorable means suitable conditions. That is, adequate amount of food and moisture is available. The mother cell divides into 2 daughter cells, and each daughter cell begins its life like a new individual. The parent generation ceases to exist. After binary fission, amoeba is a very good example of the organism which reproduce by binary fission. Now you can see here, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो गए हैं 2 न्यूक्लियस, है ना. तो यहाँ से एक जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया, दोनों अलग अलग और न्यू ऑफस्प्रिंग्स की तरह बिहेव करने लगते हैं. बाइनरी फिजन, यू कैन सी हियर बाइनरी फिजन इन प्रोटोजोआ इन अमीबा. Multiple fission, when conditions become unfavorable, that is food, moisture, proper temperature, etc. are not available, this is the preferred mode of reproduction by unicellular organism.
अब ये जो मल्टीपल फिजन है ये हमें कब देखने को मिलता है? इन द अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल अनसुटेबल कंडीशन, जबकि क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिलता ऑर्गेनिज्म को, प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर नहीं मिलता, वाटर नहीं मिलता, टेम्परेचर नहीं मिलता, then we can see multiple fission. How we can see multiple fission? Because the organisms goes into the हाइबरनेशन कंडीशन. आपने सुना होगा हाइबरनेशन कंडीशन होती है ना, एस्टिवेशन हाइबरनेशन कंडीशंस होती है, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अनसुटेबल अनफेवरेबल कंडीशन से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. उस कंडीशन में हमें मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है. द ऑर्गेनिज्म डेवलप अ थिक कोटिंग अराउंड इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड सिस्ट. द सिस्ट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू टाई ओवर द बैड फेज. द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू सेवरल न्यूक्लियाई एंड ईच डॉटर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. ठीक है, तो क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने चारों तरफ एक ऐसी लेयर बना लेता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं. वो सिस्ट क्या करती है, उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है. और अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है, और हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर क्या बन रहा है, मेम्ब्रेन जनरेट हो रही है. तो वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में वो ग्रो करते हैं. When favorable conditions return, the cyst dissolve or break down, releasing the daughter nuclei. The daughter nuclei in turn grow into new individual, plasmodium and entomoeba. It is entomoeba. Undergoes cyst stage when they are not in the body of their prime host, that is humans. ठीक है, तो जब हम देखते हैं एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, इट इज़ द पैरासाइट. ठीक है, इट कॉजेज डिसेंट्री इन ह्यूमन्स बॉडी. ये एंटोमीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है, एक पैरासाइट है. इट इज़ प्रोटोजोन. ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है. और जब ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो उसको क्या, उसे रप्चर करने लगता है और डिसेंट्री कॉज करता है. ठीक है, सो तब ये क्या करता है, जो इंटेस्टाइनल वॉल्स होती है वहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन करता है और अपना नंबर ऑफ इंक्रीज करता है. नेक्स्ट इज बडिंग. Budding, we can see budding in the yeast. Yeast is an example of unicellular organism which reproduces by budding. Unicellular organism which reproduce by budding. Hydra is an example of multicellular organism which reproduces by this method. Budding we can see budding in yeast also, in Hydra also. Okay, in yeast a small bud grows at any end of the yeast cell. Nucleus get elongated and a part of it produces into the bud. The nucleus then divides into two nuclei. One of the nuclei goes into the bud. The bud grows to a certain extent and gets detached from the mother cell. Now budding in Hydra. A bud grows anywhere on the main body of the Hydra. The bud grows to a certain size and gets detached from the mother Hydra. This develops further to grow into a new individual. So budding is what the outgrowth comes from the body and it will mature, and after maturing the bud, it will separate out from the organism's body and it will behave like a new organism. This is called budding. Now fragmentation. It is another kind of asexual reproduction. Reproduction by fragmentation is seen in filamentous algae, example Spirogera. The filament of Spirogera divides into many pieces and each piece develops into a new individual. ठीक है, तो you can see here is a picture of Spirogera algae. अब ये जो Spirogera algae है, you can see here, अगर ये यहाँ से split हो जाए तो क्या होगा, ये two new parts में organisms में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बन जाएंगे, टू डॉटर न्यूक्लियस बन जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. Now the next is regeneration. Some simple organism can regenerate a new individual from a part which has been accidentally cut off. Planaria shows good example of reproduction by regeneration. If a planaria is cut into several pieces, each piece develop into a new individual. Okay, regeneration is what? The regenerate of a new individual. कि जो cells होती हैं वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाती हैं. तो एक good example है प्लेनेरिया. प्लेनेरिया को देखिए, अगर हम इस तरीके से इसे पीसेस में भी डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, इसका अपर हाफ अगर हमने सेपरेट आउट कर दिया तो ये जो लोअर हाफ है फिर से बन जाएगा. लोअर हाफ सेपरेट आउट कर दिया तो बाकी जो बॉडी है वो कंप्लीट हो जाएगी. इफ़ वी कट लोअर एंड द अपर हाफ और मिडिल पार्ट ही बचेगा तो लोअर और जो अपर पार्ट है वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन.
Now the spore formation, it is another kind of asexual reproduction. Spore formation, most of the fungi, bryophytes and pteridophytes reproduce by this method. Spores are produced in special spore bearing organs called sporangium. When spores mature, the sporangium bursts open to release them. Advantages of spore formation is, in fact, spore give certain survival benefits to the organism which reproduce by spores. Spores can be disseminated through air and water or even through some other carriers like animals. This helps an organism to spread its presence to a wide geographical area. Spores can also remain dormant for a long time till favorable conditions are found. Scientists consider spores are precursors of seeds. ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो स्पोर्स हैं वो तब तक क्या होते हैं, जर्मिनेट नहीं करते जब तक कि उन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाए, और उनके अलग अलग करियर्स होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स, लाइक एनिमल्स. सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन. Okay students, thank you. You have to read this video carefully. If you have any doubt, you can ask your questions in the Google Meet session. Thank you so much.